What's up? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about epilators. What are epilators? Epilators are your at-home best friend. Epilators are tiny mechanical tweezers that are designed to be used at home to pull out your hair from the root. Okay, second point is क्या options available है market में. First of all, market में there are a lot of options available, okay, starting from rechargeable to waterproof, and the price range starts from 2000 to 9000. Now you have to decide which one suits you the best. Talking about my epilator I have is from Philips, and it's the satin something. I don't remember. It has been almost 10 years now, and trust me, it's working just fine, perfectly fine. Okay, so the one which I have is not cordless. It has this wire which I need to connect to the electricity, and then it actually starts working. Okay, so yeah, and the rechargeable which I was talking about is a bit more expensive than the one which I have. This is not cordless which I have. So but I have done थोड़ा सा research इधर उधर, तो इंटरनेट से ही मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, एंड देन आई गॉट टू नो दैट वो जो जिसमें आपको रिचार्ज करना होता है वो कुछ सालों के बाद उसका बैटरी जो है it stops working. Okay, I don't know for what reason because I haven't used it, so I can't say much about it, but I would recommend आप वो जिसमें कॉर्ड आता है वही वाला ले लीजिए, क्योंकि it's just working fine for me, and उसका प्राइस भी बहुत कम है. I think मैंने 2000 से लेके 3000 इसी के बीच में मैंने लिया था. मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था, तो like I said, it's been like 10 years. I don't remember the price at all. Okay, anyway, so yeah, आप कोई भी ले सकते हो. अगर आपको वो सूटेबल लगता है तो आप ज़रूर ले सकते हो. ओके, बेसिकली उसका काम तो वही है, आपका हेयर रिमूव करना, राइट. मूविंग अहेड, वेयर कैन यू यूज़ epilators? Epilators can be used on any part of your body, your face, your bikini area, या फिर of course you can use it on your body, but I don't recommend using it on your sensitive areas, for example your face or your bikini area, because trust me, it hurts like hell. Do not. Point number 4, how is it different from waxing or shaving? In shaving, like we all know, it removes your hair from the surface area, while in waxing, it removes your hair from the roots. Okay, now how is it different from waxing then? Well, in waxing, you have to go to a salon to get your hair removed, but आप epilators को घर पे भी use कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है और ये घर पे यूज़ करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड डिफरेंस. वैक्सिंग में क्या होता है, आपका बाल कंप्लीटली रिमूव नहीं होता है. मतलब अगर आपका बाल कहीं कहीं पे बहुत फाइन हेयर है या बाल आपका बहुत छोटा है, तो वो वैक्सिंग से रिमूव नहीं होता है. देन वो पार्लर दीदी क्या करती है, वो थ्रेड लेके आपका जितना भी बचा कुचा है उसको रिमूव करता है. बट इन एपिलेटिंग you don't have to do all those things, because like I said, it removes your tiniest hair on the body. Okay, मतलब अगर आपका बाल एकदम ही छोटा है, वो भी ये एकदम अच्छे से रिमूव कर देता है. There comes a point waxing के बाद, मतलब when the hair starts growing back after few days of waxing, वो बाल ना तो ज़्यादा लंबा हुआ है वैक्स करने लायक, ना ही वो उसको, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते उसको. ठीक है, यू जस्ट हैव टू लीव इट द वे इट इज़, बिकॉज एंड वेट अंटिल इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर यू कैन एक्चुअली वैक्स अगेन. This is going to be really helpful for all those days. Okay,
Point number 5, okay? Now, if you're a complete beginner or if you're completely new to epilating, then please keep in mind that you should epilate your body at night to avoid any sort of redness or irritation to your skin. Point number 6, the correct way to epilate. If you have seen my previous videos, you would know that I really focus on preparing your skin or my skin before any hair removal method, because it is very important कि आपका pores open up हो. अगर आपका pores open नहीं होगा तो आपका बाल remove अच्छे से नहीं होगा. You have to repeat that process, okay? And वो repeat करने के चक्कर में आपका skin damage हो सकता है बार बार करने से, okay? And the second point is you might face ingrown or strawberry skin texture problem. Okay, now coming back to the steps. Number 1, आप simply steam bath ले सकते हैं. आप मतलब वही warm water से आप नहा लो, या फिर आपके पास अगर वो स्किन के लिए जो स्टीमर होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई भी आपके पास हैंड टॉवल है आप उसको गर्म पानी में you just dip it into that, squeeze out the excess and press it onto your skin. Okay. Now next step is to clean your body. Now how to do that? Simple. Use any soap, use any body wash, face wash, आपको जो भी ठीक लगे आप उसको यूज़ करें, ठीक है? इसमें कुछ वैसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है. But remember, you are not using any aloe vera gel or any sort of gel for that matter. Now third point, yes, third point is to exfoliate your skin very nicely. ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही फिर से पोर्स खोलने के लिए, ठीक है? तो आपको एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है. आप कोई भी होममेड स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी स्क्रब हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको होममेड स्क्रब यूज़ करना है तो आप मेरा ये लास्ट में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं. Once you are done with scrubbing, clean your body. Your body should not be moist, okay? Pat dry your skin completely. मतलब अपने बॉडी को अच्छे से सुखा लीजिए. उसके बाद if you want you can use a powder. If you don't want to, please, no problem with it. Please do not judge me. I do not like to remove my body hair, but मुझे करना पड़ता है. So what I do, मैं सिर्फ अपने हाथों का बाल जो भी है वो रिमूव करती हूँ. I don't shave my legs or I don't wax my legs unless I'm wearing short clothes. If I'm not, I'm comfortable. Like मैं वैसे भी उतना बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ, तो फिर मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? You must be thinking, oh, how do you go out with this hair? I don't go out. I stay at home. I make videos. I am on my phone all the time, but I don't go out. I hate going out. Every time I think of going out, I just think, oh, I haven't shaved, so just chuck it, you know. And you can judge me, but I don't like to shave my legs. Now coming to the Philips Epilator, okay? उसमें एक वायर है, 2 blades है, एक body है और एक छोटा सा brush है. First you have to use the trimmer, okay? The one which will shorten the length of your hair. Once you are done with the trimming, then move on to your main blade, the one which will epilate. If you use the main blade, जो मेन एपिलेटर का ब्लेड होता है, अगर आपने उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया और आपका बाल बहुत लंबा है तो you're gone, bro. You're gone. That's for sure. Like, do not do that. Once you're done, use an ice cube all over the area to calm down any redness or irritation, and then use an aloe vera gel. You can also use any non-comedogenic cream to hydrate your skin. Do not use any oil for 24 hours as it will clog your pores, and avoid scrubbing for 48 hours.
So yeah, this was it for today's video. I hope you liked watching it, and if you still have any doubt related to today's topic, please feel free to contact me on my Insta handle, or you can leave your comments down below, okay? I would be more than happy to answer all your queries, okay? So yeah, until next time, stay tuned and stay happy. Bye bye.